Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 12th economics chapter number 5 poverty. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 9 of the chapter. So before starting the today's portion, as usual, let us move on with the summarization of the previous video. So previously we have seen about the causes of rural poverty, in that economic factors, which were covering of 5 points. The first point was low productivity per labor. So due to the lack of education, the training and the skills, the agriculturists were not being able to produce as per the labors they are producing in the out of the country. So comparatively, India is producing very less production as per the labor productivity. That is the first reason for seeing the economic poverty. Second, we have seen that unequal distribution of land and property. As the land and the property are being distributed unequally in the India, and due to the zamindari system that was being seen from the British time and the tenancy system, we can say that the landers, which means the zamindars, were not having so much interest to invest on the agriculture sector. Rather than that, the tenants were not interested to invest much more in the agriculture portion, as they were considering it is not for their income purpose. So in this manner, the unequal land and property distribution also started to create a poverty among the agriculture portion in the rural area. Next, minimal development of the industries. You can see that due to the second 5-year plan, if you are seeing, the Indian government has been implied to develop the portion of the heavy and the basic industries in the India. It didn't give the importance to the small and cottage industry. As a result, it neglected the employment generation, income generation and their contribution in the national income, due to which the unemployment was being seen up in the allied industries and the agriculture allied activities. After that, we have seen that high in price rise. So the price rise is also an important portion in the poverty. You know that increasing price rise always lead to a poverty. Why? The low per capita income of the people and the purchasing power reduction always lead the public to the poverty. So this was also been seen up a important factor or cause of the economic portion in the rural poverty. After that, we have seen the high rate of unemployment. If you are seeing, high rate of unemployment has been seen up in the rural area, as the development of the demographic cause has been seen up, and the people of the rural area were mostly dependent on the agriculture portion. So they were not ready to go to the out of the portion of their villages. Rather than that, the mobility of the labor was being seen up very less, and secondly, they were very less skilled, and due to which the wages were decreased for them. They didn't had the alternate choice of the unemployment, which means for employment they didn't wanted to get the alternate choice of employment, due to which the poverty was being seen up in a very increasing level. After that, here we completed the economic factor. Then we have saw the social cost. In that, we have seen the low level of education. We have seen in the rural area the development of the education and the scarcity of the knowledge and skills are being still up still today, and people of the rural area are not that much literate and aware of the agriculture updates and the technology. They are prevented from using that portion, by which the per hectare productivity and labor productivity are still less in the economical portion in the rural area. So these things were being considerably seen in detail in the previous portion. So now let us move on with the today's portion in a very detailed manner. So students, now let us move on with the today's portion in a very detailed manner. So today we are going to continue up with the second social reason, gender inequality. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. India has gender inequality from the beginning. Society cares less about health of females. As a result, women face highest level of malnutrition
low weight and weakness. This causes high maternal mortality during childbirth and health problems among newborn children. Work allocation in such that it is believed as compulsory for women to work at home, resulting in low level of education and less economic opportunity to work. Apart from this, at workplace, females are paid less than males. Out of the total population, less than half are women. Amongst them, low health level and less opportunity of work in economic field keeps family income low and this increase the level of poverty. इंडिया की अगर हम बात करते हैं, आज भी जेंडर इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं माना जाता है. जेंट्स लेडीज ये वाली बिगनिंग से ही देखा गया और आज भी ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है. सोसाइटी बहुत ही कम ध्यान देता है फीमेल के हेल्थ के बारे में, यानी उनको अच्छा खाना मिले, अच्छी चीज़ें मिले, ये वाली चीज़ों के आज भी हेल्थ केयर में फीमेल्स को बहुत कम सोसाइटी पे ध्यान दिया जाता है. एज ए रिजल्ट अगर हम बात करते तो जो वुमेन होती है उनको हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन को फेसअप करना पड़ता है, यानी जितना न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए उससे बहुत ही कम, यानी बहुत कम हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन. नहीं माल न्यूट्रिशन मिलने का जो हाई लेवल होता है वो लेवल ह्यूमंस को कहीं ना कहीं फेस आउट करना पड़ता है. लो वेट कम होना या वीकनेस होना, ये सारी चीज़ें औरतों पे ज़्यादा देखी जाती है, जिस रीज़न की वजह से हाई मैटरनल मोर्टेलिटी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तो प्रेगनेंसी के टाइम में चाइल्ड बर्थ देते वक्त कितनी औरतें आज भी मर जाती है या तो बच्चा मर जाता है. तो ये तरीके का कॉज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है. इवन हेल्थ प्रॉब्लम की अगर बात करो, नए बच्चे में ले लो या उनकी मदर पे ले लो, ये भी ज़्यादा देखा जाता है. इवन इट इज कंसिडर्ड दैट के 30s के बाद जो लेडीज़ होती है उनकी बोन्स खराब हो जाती है, जल्दी डिट्रॉय हो जाता है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जितना न्यूट्रिशन उन्हें मिलना चाहिए उस तरीके का न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाता. और इवन वर्क एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं, गांव के साइड में आज भी ये माना जाता है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं घर का काम करना चाहिए, इसीलिए उनकी पढ़ाई की क्या ज़रूरत है. तो लो लेवल ऑफ एजुकेशन उसका रिजल्ट बन जाता है. और लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी वो अगर पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो जॉब करने की बात तो दूर ही हो जाती है. तो घर के काम के साथ ही आज भी उनको एसोसिएट किया जाता है, ये माना जाता है. इसके अलावा अगर कोई फीमेल है वो पढ़ लिख के बाहर भी आती है और अगर वो कहीं जॉब में जाते हैं तो उस जॉब में उनको मेल्स के कंपैरेटिव कम पैसा या कम सैलरी दिया जाता है. आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, अगर पूरे पॉपुलेशन में अगर हम बात करते हैं, लेस देन हाफ आर वर्किंग. आधा परसेंटेज औरतें भी काम नहीं करती. अगर 100% लेडीज़ की कैटेगरी देखें, जेंट्स 100%, लेडीज 100%, उसमें से 100% में से 50% लेडीज आर ऑल्सो नॉट वर्किंग. वी कैन से दैट अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% लेडीज आर ओनली वर्किंग. अमॉन्गेस्ट दैम ऑल्सो, उनमें भी उनका हेल्थ लेवल लो होता है, उनको बहुत ही लेस अपॉर्चुनिटी मिलती है इकोनॉमिक फील्ड में, और इस रीज़न के वजह से फैमिली का इनकम लेस होता है और ये रीज़न कहीं ना कहीं लेवल ऑफ पॉवर्टी को इंक्रीज करता है. सो जेंडर इन इक्वालिटी भी एक मेजर इशू की तरह सोशल कॉज में देखा जाता है. अगर घर के दोनों लोग अच्छी तरीके से कमाए तो घर अच्छा चल सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सकता है, बट एक ही कमाए और 10 बैठ के खाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो जेंडर इन इक्वालिटी में लेडीज को उतना इंपॉर्टेंस ना देना भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फैक्टर्स के हिसाब से सोशल कॉज ऑफ पॉवर्टी रूरल एरिया में माना जाता है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द अदर रीजंस. अदर रीजंस में फर्स्ट क्वेश्चन है वॉर. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया fought 2 wars with neighboring country Pakistan and China. During the war, the limited resources of the country are spent on production and import of required arms and ammunition. This reduces production of basic goods and services. During the war, to avoid scarcity of the certain goods in future, people store food grains, क्लोथ्स एंड फ्यूल्स एक्सेट्रा. इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें तो इंडिया को अपने ही नेबरिंग कंट्री के साथ 2 वॉर, वर्ल्ड वॉर
जैसे बोला जाता है वैसे इंडिया को भी 2 वॉर कंप्लीट करना पड़ा, एक पाकिस्तान के साथ, दूसरा चाइना के साथ। इस वॉर के टाइम पे ये देखा गया कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज कंट्री के पास था, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और इंपोर्ट करवाते थे आर्म्स और एम्यूनेशंस की। यानी हमें वॉर के लिए जो चीज़ें चाहिए, सपोर्टिव चीज़ें, आर्म्स और एम्यूनेशंस, वो सारी चीज़ें ज़्यादा मंगवाते थे, जबकि प्रोडक्शन ऑफ जो बेसिक गुड्स और सर्विसेज है उसकी प्रोडक्शन हमने बहुत ही कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम तो हथियारें मंगा रहे थे, तो हमारे प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए थी वो तो हमने मंगवाई नहीं। इस रीज़न की वजह से हमारे बेसिक गुड्स और सर्विसेज पे जो प्रोडक्शन होता था उससे कम धीरे धीरे होने लगा। वॉर की वजह से कहीं ना कहीं सर्टेन गुड्स की स्कैरसिटी दिखने लगी, और फ्यूचर में ये स्कैरसिटी ना हो इसलिए कई लोगों ने खाने की अनाज, कपड़े, फ्यूल, ये सारी चीज़ें स्टोर करके रख लिया। As a result, price increases rapidly. Because of war, the process of economic development slows down. Due to several wars in India, developmental expenditure is reduced. Economic development remains slow and the problem of price rises take place, hence poverty increases. और as a result, जैसे लोगों ने हर चीज़ स्टोर करना शुरू कर दिया, उस वजह से उसके रिजल्ट में क्या देखा गया? वॉर की अगर हम बात करते हैं, उसके रिजल्ट में वॉर चलने की वजह से लोगों ने सब स्टोर करना शुरू कर दिया, यानी महंगाई शुरू हो गया। यानी लोगों के बीच में डिमांड बढ़ने की वजह हर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगा रैपिडली, और वॉर की वजह से हमें कंटिन्यूअस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस देखना पड़ रहा था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। इंडिया में बहुत सारे वॉर्स देखे गए, सेवरल वॉर्स आए, और हमारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो हम डेवलपमेंट के लिए खर्चा करते हैं वो कम करके हमें वॉर्स की आर्म्स और एम्यूनिटीज मंगाने में खर्चा करना पड़ा। इस रीजन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हो गया और प्राइस राइज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा गया, और हैज अ रिजल्ट पॉवर्टी इंक्रीज होने लगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। सेवरल वॉर्स मेड द इशू ऑफ सिक्योरिटी वेरी सीरियस। टू मेक द सिक्योरिटी सिस्टम स्टोरेज एक्सपेंसिव ऑन मॉडर्न मिसाइल्स, fighter planes, tanks and submarines have increased rapidly. In the present era, to fight against terrorism, a lot of special facilities have increased expenditure on defense. The expenditure on security is non-development in nature, and any increase in such expenditure reduces expenditure on economic development. Economic development slows down and the level of poverty increases. इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बात किया वॉर के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें चाहिए, कितने हथियार चाहिए, कितने ये चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हमने खर्चा किया। उसी तरीके से बहुत बार हमारे सिक्योरिटी को लेके इश्यूज रहा है, यू नो दैट, और वो भी बहुत सेवरल वॉर्स होने की वजह से हमें ये सिक्योरिटीज़ की इश्यूज पे बहुत सीरियसली आज भी पाकिस्तान कभी कभी हमला कर देता है, यू नो दैट, फॉर दैट वी नीड्स द डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए सिक्योरिटी सिस्टम यानी हमारी जो जवान है उनके हाथ में सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होने चाहिए। उस रीज़न की वजह से हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करने के लिए हमने बहुत खर्चा किया, मॉडर्न मिसाइल्स खरीदने में, फाइटर प्लान्स खरीदने में, प्लेन्स खरीदने में, रदर देन टैंक्स खरीदने में, सबमरीन्स खरीदने में, जो रैपिडली हमारे कंट्री के अंदर इंक्रीज किया गया। इन द प्रेजेंट एरा, अगर अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं, टेररिज्म के सामने झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए भी हमें बहुत सारी फैसिलिटी के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। हमारे डिफेंस में, हमारे बचाव में हमें ये सारी खर्चा करके रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई हमला कर दे तो उस टाइम पे हम उनको जवाब दे पाए। तो ये जो एक्सपेंडिचर हमारी सिक्योरिटी के लिए यानी हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए जो किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं नॉन डेवलपमेंट नेचर में माना जाता है। नॉन डेवलपमेंट नेचर, यानी इससे कोई डेवलपमेंट नहीं होना, इससे लोगों का भलाई नहीं होता, बट लोगों की सेफ्टी है। जान बचे तो डेवलपमेंट होगी, नहीं, इसलिए पहले जान बचाने की कोशिश किया गया था। और ऐसे एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज देखा गया, इस इंक्रीमेंट के वजह से हमारा खर्चा बढ़ा। ये कहीं ना कहीं खर्चा है, अगर हमला हुआ तो यूज होगा, नहीं होगा तो पड़ा ही रहेगा ना। तो इस तरीके से हमारा खर्चा बढ़ा, जो कि हमारा खर्चा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होना था वो कम करके हमने इसके अंदर ज़्यादा खर्चा किया। इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो जितना जल्दी हमारा होना चाहिए उतना हुआ नहीं वॉर्स की वजह से, और कम होता गया, धीमे धीमे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया। उस रीजन के वजह से कहीं ना कहीं पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया। सो नेक्स्ट इट इज डिफेक्टिव पॉलिसीज। Defective policies
For rapid economic development in India, the second 5-year plan onwards, basic and heavy industries were given priority, and through rapid industrialization, high economic growth was to be achieved, and thus policy of removal of poverty and unemployment was adopted. But this policy neglected the vast population depended on agriculture. Agriculture and small and cottage industries were which give the employment and income to majority of population developed slowly, and so was the income of poor people. Apart from these, various schemes were introduced during planning period to reduce poverty and unemployment, but due to frequent changing in the ruling government many times, they lacked continuously and coordination. As a result, the targeted poverty reduction could not be achieved through these schemes. सो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको पता है सेकेंड 5-ईयर प्लान जब देखा गया था तब हमने ये सोचा कैसे भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। इस रीज़न के वजह से हमने क्या किया, इस रीज़न के वजह से हमने जो हमारा बेसिक जो इंडस्ट्रीज है उसको और हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादातर प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। सो ज़्यादातर प्रायोरिटी इसमें देने के वजह से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस देखे गए, और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमने जो पॉलिसीज लगाई थी पॉवर्टी को हटाने का, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने का, ये सारी चीज़ें जो हमने अडॉप्ट की थी वो सारी पॉलिसीज को नेग्लेक्ट किया गया बहुत ही वास्ट पॉपुलेशन के वजह से। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे। हम तो इंडस्ट्री और बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे पर एग्रीकल्चर में नहीं दे रहे थे, जबकि एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा था और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट थे, उसको नेग्लेक्ट किया गया और सिर्फ उस चीज़ के ऊपर यानी हैवी और बेसिक इंडस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस रीज़न के वजह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर का और स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत ही कम देखा गया, और इस वजह से इनकम ऑफ पुअर पीपल यानी आपको पता है मेजॉरिटी 70% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो उनका इनकम भी बहुत कम तरीके से डेवलप होता हुआ नजर आया। उसके अलावा चलो ये तो सेकेंड ईयर प्लान में, उसके साथ साथ जैसे जैसे प्लानिंग पीरियड आता गया वैसे वैसे नए नए प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए लोगों की गरीबी को हटाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए। बट यू नो दैट इंडिया में फ्रिक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज होता जा रहा था। इतना बार गवर्नमेंट चेंज हुआ कि उनके चेंज होने के साथ साथ जो पुराना गवर्नमेंट ने जो सत्ते पे डाला था उसको हटा के नया डाल दो, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जो अच्छे प्लान्स थे उसे भी रिजेक्ट करके नए प्लान्स आए, तो कंटिन्यूटी एक तरीके से कहीं ना देखा गया और कोऑर्डिनेशन नहीं देखा गया। जितना कोऑर्डिनेशन रूलिंग गवर्नमेंट को एक के दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लोगों की अच्छा होना चाहिए वाला कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, वो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं देखा नहीं गया। सो लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द चेंजिंग रूल ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी वजह से जो टारगेटेड पॉवर्टी रिडक्शन देखा गया था वो कहीं ना कहीं इस स्कीम के थ्रू देखा नहीं गया, यानी रिडक्शन देखा नहीं गया, यानी सक्सेसफुली वो प्लान्स नहीं हुए, इसलिए उसको डिफेक्टिव यानी जो प्लान्स कभी काम ही नहीं कर पाए वैसे प्लान्स माने जाते। सो नाउ हियर वी आर कंप्लीटिंग अप द other factors also. Cause means what are the causes of rural poverty, rural poverty का क्या causes थे वो सारे हमने डिटेल में देख लिया। So now we are moving forward to the portion of measure to reduce poverty. चलो हमने ये सारे प्रॉब्लम्स है ये तो देख लिया, अब इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, what are the scenario to reduce that we are going to see it in a very detailed manner. Measures to reduce poverty. India has taken the following step to reduce poverty during planning period. प्लानिंग पीरियड में इंडिया ने ये सारी चीज़ें को लिया है ताकि पॉवर्टी हटाया जा सकता है। सो व्हाट आर दे, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. In India, one of the basic reason of poverty is low productivity in agriculture, which with increase in agriculture productivity and income of agriculture laborer, poverty can be reduced. Regarding this, through public programs, farmers are informed about upgraded technology, available resources at reasonable rate, improved infrastructure facility, maximum price and regulated market for that produce. Development of agriculture will increase productivity per labor. Also, employment opportunity and price of food grains will decrease.
This will be more advantageous to the poor and poverty can be reduced. So first ही हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश की, यानी इंडिया ने सबसे बेसिक रीजन जाना। सबसे बेसिक रीजन अगर हम पॉवर्टी की देखें तो हमारे एग्रीकल्चर में जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना प्रोडक्टिविटी देखा नहीं जाता, उतना आउटपुट देखा नहीं जाता। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर में आउटपुट ज़्यादा आएगा तो एग्रीकल्चर लेबरर का इनकम बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ेगा तो पॉवर्टी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पब्लिक प्रोग्राम यानी जनहित का फंक्शंस जो बोलते हैं, जनहित फंक्शंस जो सिर्फ पब्लिक के लिए ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, वैसे पब्लिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जिसमें फार्मर्स को बुलाया गया, एक मीटिंग रखा गया और उसमें फार्मर्स को इन्फॉर्म किया गया हर एक गांव में कि ये सारे नए टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने से ऐसे बेनिफिट हो सकता है। और आपको अगर कोई चीज़, जैसे आपको पता है फर्टिलाइजर से लेके हाइब्रिड सीड से लेके सारी चीज़ ग्राम पंचायत में कम भाव में मिलता है, उसके लिए एक सेक्टर भी गवर्नमेंट ने हर जगह एस्टेब्लिश करके दिया है। तो रीजनेबल रेट में उनको कहाँ से मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को कैसे, इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी को कैसे इंप्रूव किया गया है और मैक्सिमम प्राइस उनका प्रोडक्ट का है। ये भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, जितना वो पैसे लगा के उसको प्रोड्यूस करते उससे कम भाव में अगर वो बेचेगा तो लॉस हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्राइस में उनकी प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाएगा, उसके लिए रेगुलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मार्केट कैसे चलेगा, प्रोडक्शन के टाइम पर, प्रोडक्शन के बाद, ये सारी चीज़ों को उनको नॉलेज दिया गया। और इवन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तभी हो सकता है जब प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज देखा जाए पर लेबर के हिसाब से। और इवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ता जाएगा अगर प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ फूड ग्रेन्स के प्राइस भी कम हो जाएगा, इसका मतलब ये और भी ज़्यादा फायदे कारक माना जाएगा गरीब लोगों के लिए, और जो लोग पॉवर्टी में है वो उनको भी पॉवर्टी से बाहर आने का एक मौका मिलेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का फर्स्ट स्टेप लिया। Second is development of small scale industries. In India, small and cottage industry have made immense contribution in the gross national income and employment. So if small and cottage industries can be developed and encouraged, then poverty can be reduced on a larger scale. इंडिया के अंदर हमने देखा है कि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोस नेशनल इनकम के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका देखा जाता है। इवन ये नेशनल इनकम को भी बढ़ाते हैं और एम्प्लॉयमेंट के भी जनरेशन में देखे जाते हैं। इसीलिए अगर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, एनकरेज किया जाए, तो पॉवर्टी को बहुत ही लार्जर स्केल में रिडक्ट किया जा सकता है। इस तरीके से सेकेंड स्टेप जो है वो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर देखा गया था। सो अप टिल दिस टुडे वी आर गोइंग टू कीप इट अप। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen about the remaining social causes and the other factor with the measures in a very detailed manner. So second point of the social section causes was the gender inequality. In India, if you are seeing, still the gender inequality has been seen up in a very typical issue. In rural area, people believe that ladies are made up for the workhold thing, not for earning. Due to that, very less care has been given to their health, due to which the high infant mortality, due to which the mortality rate of the ladies getting died in the childbirth has been seen. Even many diseases and many things are affected to the ladies most effectively. Why? Because they are very much high malnutrition in our country. So anyhow, according comparatively to the other portion, if you are seeing, even in the economical way, in earning also they are not given that much income comparatively to man, and rather than that they have to face many problems in their portion of life. So this general inequality plays a vital role in the increment of the poverty. After that, we have seen the other reasons. In that, we have seen the war. So first of all, after the independence, we came to know that there were two wars between the China
and India and Pakistan, means India has to fight up two wars majorly after independence for their well-being. So for the security issues, to make themselves in the security manner, the India has to invest most of the money in the defensive arms and ammunitions, not for the basic need. So due to that, what happened, the people started to store the food grain, fuels and the clothes for the future, and as due to that the price increased, and as the price increased, the poverty problem started to increase more in the India. After that, we have seen that expenditure more seen up in defensive securities. So defensive expenditure was being seen more. So as several wars was being conducted by India to stay in a very safety manner, so India has to buy many modern missiles, tanks, submarines and many amenities to have a safety and security for its country. So due to that, the expenditure was being turned up to the defense portion. The expenditure on the economic development was not being done in that manner, by which the economic development was seen on a very low pace, and due to that the poverty increased to a high portion. After that, we have seen that the defective policies. So after the second 5-year plan, we came to know, even we studied it more time in the previous chapter also, that after the second 5-year plan, the India decided to have the most concentration on the basic and the heavy industry, by which it neglected the agriculture portion. But most of the people were situated in the India were doing the agriculture, as that part was being neglected by the government, due to which the contribution of the agriculture started to decrease, and as the people were started to face up the poverty by day-to-day life. And as a reason, if you are seeing, the policies didn't made up to the extent that they were decided. After that, we can say that continuously the ruling party of the government changed, and the continuity of many plans that were beneficial to reduce the poverty and unemployment were being not continued, and due to the lack of the continuity, the poverty increased more. So defective plans were also played a vital role in the portion. So there we have completed the causes of the rural poverty. Then we have seen measures. We came to know what are the problems. Now the time for the solution. What were the solutions that the government decided to reduce the poverty? The first one was to increase the productivity of the agriculture sector. So as India is an agricultural land and most of the people are still associated with the agriculture, so the government decided to do public programs and give the awareness to the farmers. So if the production will increase, the income of the farmer will increase and the poverty will be decreased. In this manner, many programs were being done by the government, making the farmer aware of the many new technology and the reasonable rates of the portions and the regulated market, how they can sell, what are the way to develop the productivity of the agriculture. These all were being taught by the government to the farmer, and they tried to increase the productivity of the agriculture so that the poor can get the food grains and the basic needs in a very less amount, and even they can get the high productivity in the agriculture, by which the farmer will become little less poor, or the reduction of the poverty will be seen in the rural area. After that, we have seen development of small and cottage industry. You know that there was an immense contribution of the small and the cottage industry for the government and national income and the employment. So the government decided to develop the small scale industry in a very better manner, so that the employment generation will be seen up, and by the generations of the employment, the poverty can be reduced in the India. So these two measures we have seen in a very detailed manner. Remaining measures we will see on the next video. I hope that this video was an interesting video for you, or until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.